हाँ ठीक है। चलो अच्छा है। एनीवे स्टार्ट प्रभु, टेक केयर। कितने लोग हैं, कितने भक्त लोग हैं कीर्तन में? हरी हरी। Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Prabhu is actually made a mistake of his name. It's Sakhya Rasa Prem actually. Sakhya Rasa Prema. Sakhya Rasa Prema. Can edit now. सहिष्णु प्रभु आप म्यूट है प्रभु। Okay, Krishna. Hare Krishna, Krishna Rama Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Rama.
Hare Krishna, Prabhu. Oh, I'm here now. I'm in your meeting. Slokaship Unlimited. Hari Hari. Hari Bol. Hare Krishna, Prabhuji, not pranam to you. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Danda pranam, Danda pranam. Sakhya Ras Krishna Prabhuji. Premanande. Hare Hare Bo. Hare Prabhuji, Krishna. we are celebrating 1 year anniversary of your last visit. 1 year. 1 Yeah. year older. Of course, you came after that, but still, you had in the initial days of COVID, we had you, and Prabhupada class, Prabhupada class. nice to have you. Thank you. Prabhuji, just give me a second to introduce your grace. We'll be having translation by Emango Prabhu, and Hare Krishna, Hare Krishna. yeah, Sure, no problem. It's fine. right. So, Just a minute, Prabhuji. I'll just introduce your grace. We are very happy and fortunate to have His Grace Sakhya Rasa Prema Prabhuji, disciple of His Holiness Jayaprakash Maharaj, a senior godbrother of ours, and Prabhuji has been in this movement from 1979, and though based in UK, has been a worldwide traveler. तो जो प्रभु जी हैं हिज ग्रेस साख्य रस प्रेम प्रभु, ये हमारे बहुत वरिष्ठ ग्रुप भाई हैं। ये हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है, और इन्होंने हमारे जो आंदोलन में 1979 में इन्होंने इंग्लैंड यूके में यूनाइटेड किंगडम में वहाँ पे इन्होंने सम्मिलित हुए थे, लेकिन पूरे विश्व में ये प्रचार करते हैं। Prabhuji is also the CEO for one of the very strong teaching institutions that he has found, that is called the BHS, and also with his good wife, they do a lot of seminars and reaching out to devotees in the form of training in Gavtam and Shastras. तो प्रभु जी जो हैं वो BHS जो एक बहुत पूरे विश्व भर में जिसका इन्होंने जो प्रचलन हुआ है, और ये भक्ति शास्त्री और जो जितने भी शास्त्र हैं उनके बारे में वो अध्ययन करवाते हैं, भागवतम के बारे में गहरा अध्ययन करवाते हैं सबको। He is also famous for his kirtan and the instrumental playing that we have heard him so many times, and had been also active in Bhaktivedanta Manor, Mauritius, Denmark, and so many other places. प्रभु जी ये बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, और ये डेनमार्क है, मॉरिशस में है, भक्तिवेदांत मिनर, वहाँ पे सब जगह इनका जो सेवा है उनकी वहाँ प्रचार करते हैं, कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा है। We like to also extend our condolences to Prabhuji because his daughter lost her father-in-law just last week in Mathura, and Ramesh Chandra Prabhuji is the name, and we would like to also pray for this departed soul. तो इनके जो हम इसके साथ साथ हम जो शोक व्यक्त भी करते हैं, क्योंकि इनके जो इनकी जो बेटी है, उनके जो ससुर हैं वो गुजर गए हैं, जो मथुरा में पिछले हफ्ते ही गुजरे थे, तो उनके लिए भी हम शोक व्यक्त करते हैं। So welcoming Prabhu and also for chanting for the departed soul, a big Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. What do you, Sakhya Rasa Prabhuji? 63 now. Hare Krishna. Over to me. Oh, I thought he said, how old are you? You How old are you, Sakhya? are always young.
every day. You are reverse aging. My Guru, Prabhupada said, you are eternal and I am eternal. Hari Hari. That is our age. Hare Krishna. We're all Sanatan. Sorry, Prabhu. I thought you said no. Prabhuji, camera seems some picture is hazy actually, maybe some dust or something. So this bottom picture is clear, the top picture is not clear. On my picture. Yes, Yes. yes. Oh, just a minute. Maybe it's the light. Maybe it looks hazy on my side too. And you Yeah. it's not so clear. Just a minute. Is that any better? Yeah, it looks better. A little bit better. It's just well, what to do? That's the best I've got. Okay. Hare Krishna. Oh, too Hare much. Krishna. Too much love. The camera is clear. Now it's okay. Yeah, it's much clear. Yes. Perfect. Just on the camera. Cheto Dharpana Archanam. Hari Hari. Like me. Okay. Hare Krishna. So if you mute your keyboard, your microphones, there's some noise in the background. It's like someone's cleaning. Yeah. Okay. We'll mute everybody. We'll mute everybody. All right. Listen. Yeah, that's better. Thank you very much, Prabhu. Okay, so please sing Radha Madhava, Jai Radha Madhava. प्रभुजी म्यूट हो गए प्रभुजी म्यूट हो गए Just a minute, just a minute. Hare Krishna, Prabhuji, can you please unmute Prabhu? Sorry. Sakyaras Prabhuji, you're on mute actually. Okay, Hare Krishna. Can you hear me? Jai Radha Madhava, Jai Kunj Bihari, Jai Radha Madhava, Jai Kunj Bihari, Gopi Jano Ballabha, Jai Girivardhari, Jai Girivardhari, Gopi Jana Vallabha, Jai Girivardhari, Jai Girivardhari.
Yasodhanandhan Bhajajanaranjana Yasodhanandhana Bhajajanaranjana Yasodhanandhan Bhajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Everyone together. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Here we go. Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Haribo, Gaura Premanandi. Hari Bol, Nittai Gaur Premanandi. Okay, that's kirtan. With I bought this in Lajpat Nagar. I bought this keyboard 2 years ago in Lajpat Nagar in Delhi. So it's got all the Indian tal. Hari Hari. And I've got one here. I'll just play it for 2 minutes. Kirtan. This is a very nice tal, and it's very lively. You may recognize it. Clap your hands. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Rama, Ram Ram Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Oh, Hare Hare Krishna. Hare Krishna. All right. I don't know how it sounds there, but anyway, it sounds great here. It's very nice, Prabhuji. Ecstatic. Maybe at the end of the class we can also have a little bit more. Yes, yes. Sankirtan is what this movement is about. We'll start and end with the kirtan. Absolutely. Hare Hare. So please put your hands together and we chant this beautiful Dwakasada mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskaryam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Tado Jaya Mudiraye Nastapreshva Bhadreshu Nastaprayesu Apatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavad-yutama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhavati Naishtiki. Bhakti Bhavati Naistiki. Hare Krishna. So we're reading from the Srimad Bhagavatam, second canto of the Srimad Bhagavatam. In the chapter 5, the cause of all causes. हम आज दूसरे स्कंद से श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद से अध्याय 5 सब कारणों के कारण उससे हम आज अध्ययन कर रहे हैं पांचवा जो उसका जो अध्याय है वहां से So this is the Sarva Karana. This is the Karanam. So सब कारणों के कारण So Narada, Sri Narada is speaking to Brahma. Brahma is Pitaji of Narad. यहाँ पे जो नारद जी ब्रह्मा जी से वार्तालाप कर रहे हैं और ब्रह्मा जी उनके पिता हैं नारद जी के. Yes, not an ordinary father, not an ordinary son. यहाँ पे कोई साधारण कोई पिता नहीं है ये और नहीं साधारण पुत्र है ये. Extraordinary. असामान्य है. So Narada is inquiring, and Brahma is listening very happily with his 8 ears. तो यहाँ पे जो नारद मुनि वो उनसे जिज्ञासा कर रहे हैं और जो ब्रह्मा जी हैं वो उनका ध्यान से सुन के उनका उत्तर दे रहे हैं. Just imagine we have 8 ears. आप सोच सकते हो कि वो भी 8 कानों से सुन रहे हैं. अगर हमारे पास 8 कान है तो कैसा लगेगा. Rupa Goswami wanted to have thousands of ears and thousands of tongues. तो रूप गोस्वामी तो बोलते हैं कि मुझे हजारों कान चाहिए और हजारों जीभ चाहिए मुझे. Because he couldn't chant the Hari Nam. He couldn't chant enough. We get tired, but he couldn't get enough. तो हम लोग तो वैसे देखा जाए तो थक जाते हैं जल्दी, लेकिन रूप गोस्वामी हजारों कान हजारों जीव इससे उनका मांग रहे हैं क्योंकि वो थके नहीं, उनको और ज्यादा उसको बोलना चाहते हैं और ज्यादा उनका गान करना चाहते हैं. This is the difference between the liberated soul and the conditioned soul. तो यही अंतर है एक मुक्त आत्मा में और एक बद्ध आत्मा में. यही अंतर है. रुचि का अंतर है. Okay, this is the shlok today. Bhavan acharat goram. Acharan bhavat ghora. Yatapasu samahita. Yatapasu samahita. Tena khedaya se nastvam.
तेन खेदयसेनस्त्वम् Parashankam yayachasi. पराशंकां च यशसि. Okay, do you want to ask someone to chant the mantra as well there? Yes. The sloka? स भवान् चरत् घोर यत् तपसु समाहित तेन खेदयसेनस्त्वं पराशंकां च यशसि. Anybody else want to chant? You're welcome. Any Matajis can unmute themselves. Yeah, go on. Mataji, you can unmute. Anybody can unmute now. We're sharing the sloka. सा भवानाचरद्घोरं यत्तापाशु समाहिता तेन खेदायसेनस्त्वं पराशंकं च यच्छसि. Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Yet we are moved to wonder about the existence of someone more powerful than you when we think of your great austerities in perfect discipline, although your good self is so powerful in the matter of creation. Right. हिंदी में उसको करना प्रभु. हाँ, हिंदी में. तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है. यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा. जय श्रील प्रभुपाद की जय. Yes. Yes. So, purport by Srila Prabhupada. Following in the footsteps of Sri Narad Muni, one should not blindly accept his spiritual master as God himself. No, you can complete, Prabhu. Complete, then I will complete. Sorry. The spiritual master is duly respected on a par with God. But a spiritual master claiming to be God himself should at once be rejected. Narada Muni accepted Brahma as the supreme due to Lord Brahma's wonderful acts in creation. But doubts arose in him when he saw that Lord Brahma also worshipped some superior authority. The supreme is supreme, and he has no worshipable superior. The ahangraho pasita, or the one who worships himself with the idea of becoming God himself, is misleading. But the intelligent disciple can at once detect that the supreme God does not need to worship anyone, including himself, in order to become God. Ahangraho pasana may be one of the processes for transcendental realization, but the ahangraho pasita can never be God himself. No one becomes God by undergoing a process of transcendental realization. Narada Muni thought of Brahmaji as the supreme person, but when he saw Brahmaji engaged in the process of transcendental realization, doubts arose in him. So he wanted to be clearly informed. Om Tat Sat. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर न मान ले. गुरु का सम्मान ईश्वर के ही समान किया जाता है, लेकिन
जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं तो उनको संदेह हुआ। परमेश्वर तो श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम है ही, उनका कोई आराध्य नहीं है। अहं ग्रोपासिता या जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है भ्रामक है, लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत पहचान सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की, यहाँ तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। भले ही दिव्य अनुभूति के लिए अहम ग्रोपासना एक विधि हो, लेकिन इससे वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति आत्मा अनुभूति की विधि से ईश्वर नहीं बनता। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को परम पुरुष के रूप में सोचा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे दिव्य अनुभूति की विधि में लगे हैं तो उन्हें संदेह हुआ। अतः वे सही सही जानकारी चाह रहे थे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Okay, so let us pray to the spiritual master for his mercy. Om Ajnanatimirandasya Jananjaya Shalakaya Chakshurāmritena Shri Gurave Namo. Sri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Jnana Bhutale Samrupa Kadamaya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri. Hare Krishna. There's many nice prayers to the spiritual master. What's that one? Pangum Langayate Girim. How does that go? तो ये जो पंगुम लंगायते गिरिम का इसका अर्थ क्या है? How do we start that one? I've forgotten the first line. Does anyone remember? What, Prabhu? What you are telling? This shloka, Pangum Langayate. हाँ, that one. Yes. Pangum langa. Sorry, this one. Mukham karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam ham mande Shri Guru Dinatarinam. Yes, thank you. Come on, thank you. Mukam karoti vachanam pangum langayate girim yat kripa tamaham bande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. In the line of Jayapataka Swami, I'm taking Diksha from Jayapataka Swami. So, like a father, like the son, we just follow his mantra, his line. So this is how he repeats this shloka. तो क्योंकि मैं परम पूजनीय जयप्रताप स्वामी महाराज से मैंने दीक्षा लिया हुआ है, तो जैसे कि पिता है वैसा पुत्र उसका वो अनुसरण करता है, पिता का पुत्र ही अनुसरण करता है, तो हम भी उनका अनुसरण करते हुए हम उनका जो श्लोक है वो श्लोक हमेशा मैं बोलता हूँ. We are like the children, the grandchildren, the great grandchildren, etc. We're all in the family and in this parampara. तो हम ये जो परंपरा में है वो हम बच्चे भी हैं, पोते हैं, उनके पर पोते ये सब है, हम ये परंपरा से अगर देखा जाए तो. So we are in this, yes, we are in this Prema Sampradaya. This Prema Sampradaya is glorious because in this particular Sampradaya we have the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो इससे जो हम ब्रह्म गौड़े संप्रदाय में है तो ये हम उनको अनुसरण करते हैं और उसमें चैतन्य महाप्रभु का हम उनका अनुसरण करते हैं, उनके शिक्षाओं का पालन करते हैं हम. And all the Sampradayas are wonderful. Sri, Rudra, Kumar Sampradaya, they're all very special, very powerful. But this Brahma Sampradaya, now we have the Madhvacharya in Udupi,
and then we have Sri Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip. So we have Udupi in the Paschim, and then we have Chaitanya Mahaprabhu in the Pura. तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारी जो परंपरा में जैसे संप्रदाय है, हमारे जैसे जो कुमार संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, वो बहुत अच्छे संप्रदाय। लेकिन हमारा भी जो संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय, इसमें जो है ना माधवाचार्य जो कि उडुपी से हैं, और चैतन्य महाप्रभु हैं जो कि नवद्वीप से हैं। तो नवद्वीप जो पूर्व में आता है और ये पश्चिम में है, तो पूर्व और पश्चिम दोनों का मिलाप है यहाँ पे। So regarding this particular shloka, the issue is coming up of the Guru Tattva. यहाँ पे जो विशेष जो श्लोक में यहाँ पे विशेषकर जो गुरु तत्व के बारे में चर्चा की गई है। And Guru Tattva has to be properly understood, clearly understood. और ये जो गुरु तत्व है, ये हमें स्पष्ट रूप से उसको समझना चाहिए। We could even have Guru Tattva seminar to discuss all the aspects of Guru, Sri Guru. वैसे जब हम इसका जो सेमिनार जब लेते हैं हम लोगों का, तो इसके ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो जितने भी जो गुरु के तत्व के जितने भी जो उसके अध्ययन है, उसका बहुत ही गहराई तक हम जाते हैं उसका अध्ययन करने के लिए। If we misunderstand Guru Tattva, then we can make all kinds of mistakes and even offenses to Lord Krishna. अगर हम गुरु तत्व का सही ढंग से नहीं समझे तो इसलिए बहुत सारे हमें ऐसे अपराध हो सकते हैं, और हम गलत समझ लिया उसको, यहाँ सही नहीं समझा तो, और कृष्ण के प्रति भी अपराध हो सकते हैं और पूरा गड़बड़ हो सकता है, आध्यात्मिक जीवन में खलबली मन सकती है। There's one nice sloka, Vande Krishna Jagat Guru. एक बहुत अच्छा श्लोक है, वंदे कृष्ण जगत गुरु। Krishna is the original Guru, Adi Guru. जो कृष्ण है वो आदि गुरु है। Balaram is the Adi Guru. बलराम है वो भी आदि गुरु है। When we refer to Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Nitai, we say Jai Shri Shri Guru Gauranga. जब हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का उसके बारे में बोलते हैं, उनका मतलब गुणगान करते हैं, तो जय श्री चैतन्य श्री गुरु एंड गौरंगा बोलते हैं, श्री गुरु एंड गौरंगा। Nityananda is the Balaram is the Adi Guru of everything, of the whole existence. नित्यानंद वो देखा जाए आदि गुरु है, पूरे जितनी भी सृष्टि है वो सबके आदि है, वो आदि गुरु है वो। So Guru means two things. गुरु का मतलब दो चीजें आते हैं उसमें। It's a personality and principle. तो एक तो व्यक्तित्व है उनका, और दूसरा उनके सिद्धांत है। If we think it's just a personality, we make a lot of offenses. इसलिए हम उनके जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को हमारे उसके प्रति भी हम अपराध नहीं करने का हमको। Yes, so when it's a principle, when we understand Guru is principle as well, that means we understand correctly two lines. Then we have balance. इसलिए जब हम ये भी समझते हैं कि गुरु है वो भी एक व्यक्तित्व है, उसके साथ सिद्धांत भी है, तो तभी हम दोनों को अच्छे ढंग से बांध सकते हैं, एक दूसरे से बांध के रख सकते हैं हम। Srila Prabhupada, he offered his Guru Vyasa Puja in Mumbai in 1936, I think it was, after Bhaktisiddhanta had passed on. But that Vyasa Puja offering is so wonderful because Prabhupada is perfectly defining what is Sri Guru. तो हमें याद है कि जब 1900 जब श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर का तिरोभाव हुआ था, तब श्रील प्रभुपाद ने उनकी पूजा की थी, और तब हमें स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात हुआ कि गुरु तत्व क्या है और गुरु का पूजा क्या है, गुरु परंपरा क्या है। Now, when I joined ISKCON back in 1979, the new Guru system had just begun after Prabhupada had left the planet. तो इसलिए जब मैं 1979 में जब मैंने सम्मिलित हुआ था हमारे आंदोलन में, तो उस टाइम में जो नया जो गुरु का जो है जो विधि है, उसका गुरु तत्व का विधि उसको अपनाया गया था, और जबकि 1977 में जो है श्रील प्रभुपाद चले गए थे, इस ग्रह से छोड़ के, इस ग्रह को छोड़ के गए थे।
and the GBC had established 11 Diksha Gurus for the whole world. और हमारे जो समिति है जो इसको अनुशासित प्रशासित करने वाली जो प्रशासन करती है हमारी समिति, जिसको जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन बोलते हैं, तो उन्होंने इसका जो पूरा इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया था गुरु तत्व गुरु परंपरा के बारे में. Yes, to keep things going. So there were some mistakes made, but it's fine. The mistakes were there because we were young. The oldest, I mean, we had gurus in their late 20s and 30s. The oldest, I think the oldest devotee in ISKCON was 40. So we were very young, and we were not quite experienced enough to understand Guru Tattva then. तो देखा जाए तो जब ये हमारे गवर्निंग बॉडी कमीशन ने जो समिति है जो प्रशासन चलाने वाली, ISKCON को चलाने वाली, उसमें जो 11 गुरु उन्होंने दीक्षा के लिए वो किए थे, उन्होंने उनका मतलब वो दिया था, उनका अधिकृत किया था उनको. तो लेकिन वैसे ही जो हम जो बहुत ही कम लोग थे उस टाइम में, 40 जो वरिष्ठ शिष्य थे उनके प्रभुपाद के जो वरिष्ठ भक्त थे, लेकिन हमें फिर भी क्योंकि हम सब जवान थे, युवक थे, तो हमें गुरु तत्व के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था हमें. So what happened, I'll just briefly explain it before I go into the other part of this purport, but what happened was because we were young, the disciples were young, we were in our late teens, early 20s, and the gurus were young, the movement was young, and many of the disciples, they were saying, oh, my guru is better than your guru. तो यहाँ पे क्योंकि हम उस टाइम में जब सब जवान थे, अभी हमारे लिए नया था सब कुछ सिस्टम, इवन जो हमारे गुरु वो भी नवयुवक थे, तो हम लोग तो अभी इतना ज्यादा हमको कि अनुभव नहीं था गुरु परंपरा के बारे में, गुरु के बारे में, तो हम इसलिए हमेशा ये बोलते रहे, अरे आपके गुरु से मेरा गुरु ज्यादा अच्छा है, ऐसा हम बोलते रहते थे. And in ISKCON worldwide, we were having what we called guru wars. तो उस टाइम में पूरे विश्व में जो गुरु का वो था कि गुरु क्या है और कैसा, उसके बारे में हमें काफी वो रहता था. And we were all trying to be better. My guru is better and your guru is better, and we were all kind of competing, became very competitive. तो इसलिए उस टाइम में क्योंकि हम नवयुवक थे, इसलिए हम लोग बहुत प्रतिस्पर्धा करते थे हमेशा कि मेरा गुरु आपसे अच्छा है, उसका गुरु आपसे गुरु से ज्यादा, ऐसा वो उसी में प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी आपस के गुरुओं में. And many offenses were made at that time as well. Many of offenses, aparad. हाँ, तो उस टाइम में बहुत सारे इसलिए अपराध करते थे हम लोग, है ना, बहुत सारे अपराध हुए थे हम लोगों से. This is because we were thinking Guru is a personality. क्यों ऐसा हो रहा था ये अपराध? क्योंकि हम ऐसा सोचे थे कि गुरु एक व्यक्तित्व है, हम ऐसा सोचते थे. So Guru is a personality, but also a principle, both. तो गुरु है ना, ठीक है, व्यक्तित्व है, लेकिन उसके साथ साथ सिद्धांत भी है, वो दोनों एक साथ है. In the spiritual life, we have two vidhi, two lanes, like a railway, the railway line. Bhagavad vidhi, Pancharatrika vidhi. हमारे आध्यात्मिक जीवन में दो, जैसे रेल की पटरी पे दो पटरियां होती है, वैसे ही हमारी जो दो विधियां हैं, तो एक तो पंचरात्रिक विधि है और दूसरा हमारी जो सिद्धांतिक विधि है, ये है दोनों. If we only follow Bhagavad vidhi and forget Pancharatrika, we become Vedantists. इससे हम सिर्फ भागवत विधि का ही हम अगर पालन करें, और अगर हम जो पंचात्रिक विधि का पालन नहीं करेंगे, तो हमें न वेदांती बन जाएंगे हम लोग. And if we only follow Pancharatrika vidhi, we become Sahajyas. सिर्फ हम पंचरात्रिक का विधि का पालन करें, भागवत विधि का पालन नहीं करें, तो हम लोग सहजा बन जाएंगे फिर. Because we become sentimentalist, we won't have knowledge of the Shastras, so we become like Sahajya type. क्योंकि उस टाइम में हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण हम भावुक हो जाते हैं, तो इसके लिए क्योंकि हमें ज्यादा ज्ञान नहीं शास्त्र का रखते हैं उस समय में नवयुवक होने के कारण, तो हम लोग सहज असली बन जाते हैं. So we require Bhagavad vidhi and Pancharatrika vidhi, two lines of so the train can safely travel on the track. इसलिए हम जो जैसे ट्रेन को भी चलने के लिए जो दो पटरी की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही हमें भी जो ये भागवत विधि और पंचायत दोनों विधि की आवश्यकता है, तभी हमारा भक्ति रूपी जो
जो ट्रेन है वो चलती रहेगी आराम से वो। Yes, this is important too. Not one. तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये तो पंचात्मिक विधि और भागवत विधि दोनों का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे। जैसे ट्रेन की पटरी के लिए, ट्रेन चलने के 2 पटरी की आवश्यकता है, वैसे ही One we become Bhagavad is we become Vedantist. The other one Pancharadrika, we can become Sahajiya. तो अगर हम लोग है ना सिर्फ भागवत विधि को अगर हम अपनाते हैं तो हम है ना वेदांती बन जाएंगे, और अगर हम सिर्फ पंचरात्र की विधि करते हैं तो हम लोग सहजिया बन जाएंगे हम लोग। In the Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami, he says, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhimbina Aikantiki Harer Bhakti Utpatatyaiva Kalpate. यहाँ पे श्री गोस्वामी ने भी जैसे हम बताया भक्ति सिंधु में कि कैसे हम लोग है ना पहले श्रुति स्मृति और फिर पंचरात्रि की विधि, इसके ये जो भगवत विधि, ये हमें उससे क्रमशः हमें उसका पालन करने का हमें। If we don't have the knowledge of the Bhagavad Vidhi, then Utpat, we just create a problem. अगर हम भागवत विधि का अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो बहुत ही ज्यादा हम खलबली मचाएंगे, उत्पात ही होगा सब जगह। And therefore, only following Pancharatrika, also another problem where it's like Kanishta Adhikar. This is explained by Kapila Dev in the 3rd canto of the different types of bhakti, Kanishta, Madhyam, Uttam, etc. और जैसे कि 30 स्कंद में भी दिया गया है भक्ति का कनिष्ठ, उत्तम और मध्यम अधिकारी, इन तीनों का भक्ति दिया, वैसे ही अगर हम लोग भी सिर्फ हम भागवत को नहीं छोड़ के सिर्फ हम पंचरात्र विधि का ही पालन करते हैं, है ना, तो उस टाइम में भी हमें ये जो कनिष्ठ, मध्यम और जो उत्तम अधिकारी, ये हम उसके वर्ग में आना पड़ता है उसको। Okay, so I've covered the Guru point. I wanted to make this point of Sri Guru because then it's up to you, Prabhus and Matajis and everyone, it's up to you to do your research to find out about what is Sri Guru. Is it a person? Is it a principle? No, it's both. Sri Guru is person and principle, and ultimately Sri Guru is God himself. That's why Sri Guru is on par with Bhagawan. He's not God, but we worship him as if it were God. So this is important principle to understand. इससे जो गुरु होता है वो गुरु देखा जाए तो व्यक्ति तो है, इसके साथ साथ सिद्धांत भी है। तो जब हम इन दोनों का जब पालन करते हैं तो जब दोनों को वो मानते हैं तब वो गुरु को हम भगवान जैसे ही सम्मान करते हैं फिर हम लोग। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमें कि गुरु को हम सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं माने, यानी इस गुरु को सिर्फ सिद्धांत ही नहीं माने, हमें दोनों मान के चलना है, तभी हम भक्ति जीवन में आगे उन्नति कर सकते हैं हम लोग। Therefore, I urge you individually to learn more about Sri Guru. इससे मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि हमें ज्यादा गुरु के बारे में सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए उनको समझने के लिए। So on the point of the purport here, Jagadananda Pandit, he was a great devotee of Chaitanya Mahaprabhu who lived in Jagannath Puri. जगन्नाथ पंडित थे, वो चैतन्य महाप्रभु के जो बहुत उच्च कोटि के पार्षद भक्त थे और जगन्नाथपुरी में रहते थे वो। According to the Ganodesha Dipika, Jagadananda Pandit is the reincarnation of Satyabhama. तो गौड़ गढ़ी का जो है जिसमें ये बताया गया है कि जो जगन्नानंद पंडित है जो वो है ना उनके जो चैतन्य महाप्रभु के what he is actually प्रभु, He is the incarnation of Satyabhama. और ये सत्यभामा के अवतार है देखा जाए तो। So Satyabhama, Jagadananda Pandit had a special relationship with Chaitanya Mahaprabhu. इसलिए जो जगन्नानंद पंडित का जो बहुत ही विशेष उनका रिश्ता है चैतन्य महाप्रभु के साथ में। So he wrote a book, the Prema Vivarta. तो उन्होंने एक पुस्तक ली जिसका नाम प्रेम विभक्त लिखा था उन्होंने। So Prema Vivarta, he writes one slok, Krishna Bahimukha Kona Bhoga Bancha Tare. तो इसलिए उन्होंने भी इस श्लोक में बताया कि कृष्ण का जो बगैर उसके अगर कोई अगर भोग लगाना चाहता है तो वो
बगैर उसके भोगना चाहता है भौतिक जीवन को, तो Yes. उससे वंचित रह जाएगा जो सच्चे आनंद से वो। So we turn the jiva, he explains that the jiva, bahirmukha, we turn our head away from Bhagwan and then we come into this world. तो इससे जब बहिर्मुख हो जाता है, जब भगवान से दूर हो जाता है, मतलब भगवान से अपना मुख मोड़ लेता है कोई जीव है, तो वो इस भौतिक जगत में फिर उसको आना पड़ता है। When we turn our face away from Krishna, bahirmukha, it means we want to become Krishna. तो इससे जब हम भगवान कृष्ण से अपना मुख मोड़ लेते हैं, तो फिर हम है ना अपने आप को कृष्ण समझने लगते हैं और कृष्ण बनना चाहते हैं फिर हम लोग। Sometimes we want to become God himself. We want to be called God, Bhagawan. We know so many people in India, they have been given the name Bhagawan. One man now recently was on the internet and he didn't want to go to his office because he was saying that I'm God, I'm Bhagawan. तो अभी अभी एक इंटरनेट पे ऐसा हमें कुछ सूचना मिली थी कि कोई भी एक व्यक्ति था जो है ना अपने आप को भगवान समझने लगा और वो ऑफिस में जाता ही नहीं था और बोलता ना मैं है ना खुद ही मैं भगवान हूँ, मेरे को जाने की क्या जरूरत, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं मेरे को। So some of us want to be Bhagawan, and some of us want to have the position, the enjoyment of Bhagawan. तो इसके लिए हम लोग कुछ लोग हैं जो भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन और कुछ लोग जैसे कि भगवान आनंद भोगना चाहते हैं, भोग करते हैं, भोगता है, वैसे हम भी भोक्ता बनना चाहते हैं। So this is a disease. This is called the Bhava Rog. तो इसलिए ये जो जितना ये भाव रोग है इसको माना जाता है, ये सबसे बड़ा हमारा रोग है, वो है भाव रोग है वो। Yeah, the desire to be God. और उसका यही है कि हम सिर्फ भगवान बनना चाहते हैं हम लोग। So when Sri Guru, someone takes the position of Sri Guru, or sometimes they say Shad Guru. Shad means the true Guru. They have to be very careful to understand how to present God to the people. तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा एक सावधान होना चाहिए कि हम जो साधारण जो जन सामान्य है उसके बीच में भगवान को कैसे हम लेके आए और उनका प्रदर्शन कैसे कराएं। If someone says that I can make you God or you can become God, then we know that this type of guru is asat guru. तो इसलिए जब हम किसी के पास जाते हैं और कोई गुरु बोलता है मैं तुमको भगवान बना सकता हूँ, तो ये सब असत गुरु की श्रेणी में आते हैं ऐसे गुरु लोग। And we have to avoid such a person. We have इसलिए to. हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमेशा। We don't have to be offensive. We don't have to make the upper. We can say Jai Sadguru, bye bye. तो हमें ना कभी उनकी बुराई नहीं करना, उनके प्रति कोई चरण में अपराध नहीं करना, सिर्फ हम उनको बस सदगुरु जय करके हम वहां से निकल जाना बस। It's very difficult to convince someone who thinks they're God that they're not God. It's very difficult. Waste of time talking to these people to argue that you are not God. And if someone thinks they're God, let them be God. इससे बहुत सारे जो लोग हैं जो इसको ही मानते हैं, भगवान अपने आप को मानते हैं और भगवान को कुछ नहीं मानते हैं, तो इनके साथ में समय व्यर्थ गवा के कुछ फायदा नहीं है। इनके दिमाग में बात घुसी है कि हम लोग भी भगवान बन सकते हैं, भगवान से ऊंचे भी बन सकते हैं हम लोग। Yeah, the difficulty is that we are God because we're the Mama Ivanksha. Mama Ivanksha Jivaloke, Jiva Buddha Sanat. We are Anksha. We are a tiny Anksha of God. So in one sense, we are God. But we're not the Swayam Bhagavan or the Param Satyam itself. तो यहाँ पे जो है ना जो परम जो सत्य है वो एक्चुअली वो एक भिन्न है और हम उनके अंश हैं। सिर्फ हम कभी भी जो परम सत्य नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते, हम उनके अंश है और अंश ही रहेंगे हमेशा। ये हमारे दिमाग में बात घुसना चाहिए हमेशा। So this Ahangropasana means this process. It's an impersonal process of becoming God, like the Mayavadi. Chaitanya Mahaprabhu says, Mayavadi Bhashya Shunile Hoy Sarvanash. तो यहाँ पे जैसे पता है कि मायावादी का जो अगर हम कुछ सुनते हैं, अगर उनका प्रवचन वगैरह,
तो हमारा पूरा भक्ति का सर्वनाश हो जाता है, हम भक्ति में नीचे चले जाते हैं। If we hear the philosophy of the Mayavadi without understanding Bhakti Tattva, then our spiritual life is ruined. इसलिए जब हम बगैर भक्ति के सिद्धांतों को समझते हुए अगर हम ऐसे भगवान को ऐसे दारिद्र क्रम समझने का प्रयत्न करते तो हमारा भक्ति जो जीवन है वो खतरे में आ जाएगा और हम आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी हमारी। I was personally very confused at one time. Why is Srila Prabhupada talking so much about Mayavadi in his Bhagavad Gita? He talks so much in the second chapter about Mayavadis. But Prabhupada wants us to know the difference between Bhakti and Mayavad. तो लेकिन यहाँ मैं भी कभी कभी ये बहुत ही शंकास्पद हो जाता है जब मैं देखता कि श्रील प्रभुपाद ने हर जगह बहुत सारी जगहों पे मायावादियों की बहुत भर्त्सना की है, उन्होंने काफी उनको झंझोड़ा है उन्होंने, तो इसलिए मैं भी काफी मतलब शंकास्पद हो गया था। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये मायावाद जो अलग है और मायावाद जो हमारे जो भक्ति योग जो अलग है, तो हमें ये भक्ति योग को समझने का प्रयत्न करेंगे अच्छे ढंग से, तभी हमें भी मायावाद के बारे में समझ में आने लगी बात की मायावाद क्या है। If we hear about Mayavad Bhashya from the Guru in Bhakti, that is okay. From Bhakti Vedanta, that is good. But if we hear Bhakti from a Mayavadi, then Avaishnava Mukhot Girnam Putam Hari Katamritam. It's like taking the milk after the snake has touched it. So hearing about Mayavadi from the Bhakti Vedantas, that is okay. But hearing Bhakti from the Mayavadi, that spoils our spiritual life. इससे जो भक्ति है वो अगर हमारे भक्त सुनते हैं अगर भक्ति वेदांत से, तो हमारा तो आध्यात्मिक जीवन में बहुत सुरक्षित है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर भक्ति के बारे में अगर मायावादी से सुनने जाएंगे तो हमारा जितना भी जो थोड़ा बहुत भक्ति है वो भी सब चला जाएगा हमारा। Okay, so that's the points there on this guru business. Guru is very important. It can be when one is guru, one gets power. One gets power. The disciple is giving the power, their power to guru. So being guru is a very responsible position. तो इसलिए जो गुरु जब कोई बनता है तो ये बहुत ही उत्तरदायित्व का वाला जो है स्थिति है, बहुत ही उत्तरदायित्व आ जाता है इसके ऊपर। तो इसलिए जो गुरु जो हम देता है जब उसके शिष्य को, तो शिष्य भी फिर है ना उसको उसके हिसाब से उनमें आदान प्रदान होता है और शिष्य फिर उसको गुरु को मतलब एक बोलते हैं उनका गुरु का उनका आगे का पालन करके उनको भक्ति में आगे बढ़ता है वो। And guru, also a point on guru again, is the guru is not about gyan. The guru is not a gyani. He may have gyan, but he's not a gyani. तो यहाँ भी बता रहे हैं कि जो गुरु है वो सिर्फ यही है ना कि सिर्फ ज्ञानी ही है, बस ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ज्ञानी है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, हमें सोचना चाहिए। The guru is much more than the gyani who has got, knowledge of the shastra. He's someone who is very responsible, he's like a father to the child, a responsible father. तो इसलिए जो गुरु होता है वो एक तो देखा जाए तो एक बहुत ही बड़े महान उत्तरदायित्व रखा हुआ एक व्यक्तित्व है, ठीक है ना। तो हम जैसे कि पिता होता है, जैसे पिता की जिम्मेदारी निभाता है, वैसे गुरु भी एक जिम्मेदार पिता की तरह ही होता है जो अपने शिष्य को उद्धार करने की जिम्मेदारी निभाने का हमेशा लगा रहता है, उसका प्रयत्न करता रहता है। So Sri Narada here, he's very amazed by his father Brahma, how he's so fixed in his sadhana and his disciplines, and how he's so empowered to create, do amazing things. So he's enamored by Brahmaji, but somehow he's thinking, if Brahma is also meditating, then who's he meditating on? Himself? He's get confused. इसलिए जब वो ब्रह्मा जी को भी जब ये बोलता है जाता है दानवनी, तो उनको लगता है कि जो ब्रह्मा जी हैं
वो तो पहले तो उनको लगा कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उन्होंने सब सृष्टि की रचना की है, सब कुछ किया, लेकिन बाद में जब वो देखते हैं कि नहीं, ये तो किसी के ऊपर ध्यान लगा के बैठे हैं या समाधिस्थ है, तो ये कौन, मतलब कोई आदमी उससे ज़्यादा कोई उच्च अवस्था में, उससे ज़्यादा ऊंची अवस्था में उसी को ध्यान करेगा ना। जैसे वो फिर उसको शंका होती है कि अगर ब्रह्मा जी ने सब कुछ है तो फिर ये किसके ऊपर ये ध्यान लगा रहे हैं, वो किसके ऊपर समाधि बना के बैठे हैं, ये उनको आश्चर्य हो रहा था। Sometimes someone is so great, you think, oh, no one can be greater than this person. तो कभी कभी हम देखते हैं कि कोई इतना महान हो जाता है, इतना महान व्यक्तित्व वाला होता है, तो कभी फिर हमें ऐसा लगने लगता है, अरे इससे बड़ा कोई संसार में है नहीं, सबसे ज्यादा बड़ा है। But when we see the person we think is so great bowing down to someone else, we can become confused. जैसे हम देखते हैं कि जब कोई बहुत ज्यादा महान व्यक्तित्व वाला आदमी जब किसी के सामने दंड प्रणाम करता है, तो फिर हमें लगता है ये इतना ज्यादा महान व्यक्तित्व वाला है, इतना सब कुछ है, इतना उच्च कोटि का वैष्णव है, तो ये है ना क्यों उसके सामने मतलब झुकता है। तो इसका मतलब फिर हमें फिर शंका होने लगती है कि इससे मतलब ये ज्यादा, उससे ज्यादा आगे है, ये इसके लिए उसके सामने झुक रहा है। When Brahmaji, when he performed this Brahma Vimohan Leela, stealing Krishna's cows and calves, it was Brahmaji who came to the earth and he bowed down to this little young boy who was looking after his calves. He bowed down to him. और आप देखते हैं ब्रह्मा विमान लीला में भी जब ब्रह्मा जी हैं, वो पहले उनको समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में एक छोटे सा बच्चे के रूप में थे उस टाइम में भगवान कृष्ण, उनके सामने भी जब ब्रह्मा जी उनके सामने अपना सर झुकाया था, कि उनको समर्पण किया था। So in this way, God is a great mystery. Rahasyam hyetad uttamam. It's a great mystery to understand God. तो इसलिए ये भगवान को समझने के देखा जाता है, ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये इसको रहस्य को हमें समझने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें बहुत ही विनीत भाव से उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। So Prabhupada says here, Srila Prabhupada says that God doesn't have to follow any process to become God, and neither does God have to worship himself. तो यहाँ वैसे बताया कि ऐसा नहीं कि हमें कोई एक विधि है भगवान बनने की, हमें आना बहुत इस ध्यान में लगे रहेंगे तो भगवान बन जाएंगे, या फिर अपनी पूजा करेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है ये सब कि हमें भगवान बनने के लिए सब करना पड़ता है। भगवान तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान का अवस्था बनाए रखने के लिए, अपने आप को उस पोजीशन पर रखने के लिए। So Krishna doesn't worship himself. तो कृष्ण कभी भी अपनी पूजा कभी नहीं करते हैं, but he does worship something. लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ और के द्वारा मतलब पूजा करना चाहते हैं, वो करवाना चाहते हैं। Krishna worships his own devotees. तो वो और भी ज्यादा वो खुश होते हैं जब हम उसके खुद के भक्तों की जब वो पूजा करते हैं, तो उनको और अच्छा लगता है। We all know the greatest devotee of Lord Krishna is Srimati Radharani. तो कोई नहीं जानता है कि जो सबसे जो महान भक्त है जो भगवान कृष्ण का, वो एक मायावती थे। So Radharani is the greatest devotee of Krishna, but Krishna also worships sometimes Lord Shiva. तो इससे राधारानी जो सबसे महान भक्तनी है भगवान कृष्ण की, तो वो भी कभी कभी उनकी पूजा करती है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कभी कभी भगवान जो है वो भी उनकी पूजा करना चाहते हैं। Vaishnavanam Yata Shambhu, Lord Shiva. Ramachandra, he worship also Lord Shiva. तो इसलिए जो शिवाजी जो है, शिव जी हैं जो वैष्णव यथा शंभु, तो वो है ना, उनको इवन जो राम जी ने भी उनकी पूजा की थी, ब्रह्मा जी ने भी उनकी पूजा की थी शिव जी की। Krishna worshipped Sudama, his own devotee, by washing his feet. तो कृष्ण ने सुदामा की पूजा, जबकि उसका उनका भक्त था, वो उनका मित्र भी था, उनका भक्त था, उनकी पूजा की थी उन्होंने। So there are many instances where God, he is worshipping, but not himself. He worships his own devotee. जैसे कई हमें ऐसे जगह पे देखते हैं कि जो भगवान है वो अपने भक्तों की, उनकी भी वो पूजा करना चाहते हैं, उनको भी वो गुणगान करना चाहते हैं, उन भक्तों का, सिर्फ अपना ही नहीं चाहते, उनके भक्तों का भी चाहते हैं वो। And actually Krishna, Bhagavan, he enjoys, he relishes worshipping and serving his devotee, like Arjuna. He became Partha Sarati.
for his own devotee. तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे भगवान भी है ना अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, जैसे कि भगवान जो है वन अर्जुन के खुद सारथी बन गए थे, आपको सबको मालूम है। He was Arjuna's personal taxi wala. तो देखा जाए तो वो उसका व्यक्तिगत एक टैक्सी वाला बन गए थे अर्जुन का, जो कृष्ण भगवान है। Just imagine you go to India, and you, not now because India is a little difficult with COVID-19, but you go to India, you get in the taxi and Krishna is driving. अगर आप कभी कभी अगर जाओ इंडिया भारत में जाओ, और भारत में ठीक है अभी तो कोविड का समय चल रहा है, और अगर आपको लगे कि जो देखो आप टैक्सी में बैठे और आपको अचानक लग रहे जो मेरी टैक्सी को कृष्ण चला रहे हैं, But we'd all be very surprised, but this is what Krishna does. लेकिन हमें तो बहुत ही आश्चर्य अचंभित हो जाएंगे, हम आश्चर्यचकित में रह जाएंगे, लेकिन ये तो भगवान कृष्ण कर रहे हैं। In fact, Krishna, Bhagavan, he very much likes to take the inferior position. तो भगवान कृष्ण देखा जाए तो हमेशा जो निम्न स्तर की जो अवस्था है, निम्न स्तर के उसमें आना चाहते हैं, हमेशा हमेशा ऊपर ऊपर नहीं रहना चाहते हो। Another example of Krishna in this service mentality is that when in the Mahabharata, at the Rajasuya Yagya of Maharaj Yudhishthira, it was Krishna who volunteered to wash the feet of the guests. तो यहाँ पे देखा जाए तो भगवान कृष्ण का एक और जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने जब राजसूय यज्ञ हुआ था, हमारे ऋषि ने किया था, तो उस टाइम में कैसे उन्होंने अपने जो भक्तों की सेवा के लिए उन्होंने ये सेवा ली कि जो भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी जो यज्ञ अटेंड करने के लिए, उनके सबके चरणों को वो धोएंगे, ये उन्होंने सेवा ली थी। तो निम्न हमेशा नीचे की अवस्था में भगवान कृष्ण रहना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो हमेशा। Of course, if someone says to me, Sakhya, can you wash the feet of all the guests? I'll be like this. I'll be I'll be thinking about it. इसलिए कभी कभी कोई अगर बोलता है कि नहीं आप है ना जो जितने भी आए हुए हैं मेहमान, उनका सबका पैरों को धोइए उनको, तो हमें अगर मुझे कोई बोले इसके कि सब जो भी आए भक्त उनका चरणों को धोइए आप, तो मैं भी थोड़ा मतलब एकदम उसमें आश्चर्यचकित है, सब क्या बोल रहा है ये। Because of the ahankar, because of false ego, I'm thinking some people will be okay, but I'm thinking, oh, this is a very low service to wash people's feet. तो लेकिन कभी कभी हमारे अहंकार वश हम कभी ये हमारे दिमाग में आ सकता है, आता भी होगा कि अरे ये दूसरों के जो लोग आ रहे हैं उनके पैर धोना, ये तो बहुत निचली सेवा है, ये कोई सेवा नहीं है, तो बहुत ही नीचे गिरने वाली सेवा लग रही है। तो But Lord Krishna, he was very happy to wash the feet of the guests at the Rajasuya Yagya. लेकिन जो भगवान कृष्ण खुद बहुत ही प्रसन्नचित्त है ये सब सेवा लेके, कि जितने भी वहाँ पे जो राजसूय यज्ञ को अटेंड करने आएंगे, उपस्थित होंगे, उसमें उन सभी का वो चरणों का वो धोते हैं। तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा वो था, भगवान के लिए बहुत आनंद का वो था, विषय था, ये अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। So these are thoughts, we can think about these things, how Krishna is acting. When Krishna was in Dwarka living with Satyabhama, Rukmini, Lakshmana, Jambavati, all the queens, in the morning he would rise and he would sit down, and in his palaces he would be in Svangsha. He would be in his Svangsha expansion, which is multiplying his own form many thousands of times. तो यहाँ पे जो भगवान के साथ देखेंगे कैसे है ना, वो अपने जो कई मतलब अपने रूपों में अपने आप का विस्तार करते हैं, वो अपने जो अंश जो है उनके इसलिए अंश बनते हैं बहुत सारे, क्योंकि अपने से कई का वो निकालते हैं अपने रूप, उनका विस्तार करते जाते हैं वो। So when Krishna was there, he would sit down and he would meditate. तो जब कृष्ण जब बैठते थे अपने उसमें वहाँ पे द्वारका में अपने महल में, तो उस टाइम वो समाधि लगाते थे वो। So Krishna would sit down and he would meditate on himself. तो कृष्ण एक जगह बैठ जाते थे और फिर वहाँ कभी बैठ के भी अपने ऊपर वो समाधिस्थ होते थे, वो अपना ध्यान करते थे वो। So this meditating on himself, for Bhagavan to meditate on himself, that is very nice, and he can do that.
But for us to meditate on ourselves, this is useless. तो इसलिए हम जब यह जब करते हैं कि हम अपने भगवान अपने आपके ऊपर अगर वो करते हैं ध्यानस्थ हो समाधि लगाते हैं, लेकिन हम अगर अपना लगाएंगे तो हमें हमारा तो उसमें कोई वो नहीं है कि हम भगवान बन जाएंगे। ये सब मतलब समय का अपव्यय है, ये देखा जाए व्यर्थ ही समझ जाता है। लेकिन भगवान जब समाधिस्थ होते हैं तो उसमें कुछ उसका अर्थ होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बड़े हैं इसके लिए, इससे बढ़ के कोई नहीं है उनका। The Mayavadi, the impersonalists, the Buddhists, the Shunyavadi, they like to meditate on themselves. Everything is about themselves. But the Vaishnava, we meditate on Bhagavan, on Krishna, and even Krishna, he meditates on himself. So this is an important point to understand. तो यहाँ पे जैसे देखा जाए तो जो है भगवान वो खुद समाधिस्थ होते हैं, तो ऐसा करके, लेकिन हम लोग ये कभी भी अपने आप के ऊपर समाधि नहीं लगा सकते। हम ध्यान करते हैं हमारे से जो भगवान का हम ध्यान करते हैं, ठीक है ना। ये तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि हम भगवान का ही ध्यान करें, ठीक है ना। And then Krishna, Lord Krishna, after he had meditated in the morning in his palace, he would sit in Swangsha in thousands of forms, exactly the same form, Swangsha. There's different types of expansions, Angsha, Kalaha, Swangsha, etc. And when he would sit there meditating, then he would get up and he would leave the palace and he would become one form. All the forms would become one, and he would then go to the Sabha, the great hall, to meet the king and the others. इससे में जब वो उनका बहुत सारे रूप में रहते थे, लेकिन वो जब उनको सभा जाने होता था तो उस टाइम में ये सब आपस में मिल जाते थे और एक ही रूप में जो फिर वो सभा में जाते थे। तो ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें इस बात को समझना। So this is how God is great. He can expand his form unlimitedly. He can expand into different avatars. There are six main avatars: Purusha, Guna avatar, Manvantara avatar, the Yuga avatar, the Leela avatar. These are different types of avatar. And then Krishna himself is called Avatari, the origin of all avatars. इससे जहाँ अवतारी को कृष्ण खुद अवतारी कहलाते, इससे उन्होंने 6 जो मुख्य जो उन्होंने जो अवतार, जैसे गुण अवतार है, इसके बाद लीला अवतार है उनका, फिर इसके बाद उनका जो ये वाला पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार है, पुरुष अवतार है। तो ऐसे करके वो 6 ये उन्होंने जो मुख्य जो उनके जो अवतार हैं, भगवान कृष्ण अवतारी इसलिए कहलाते हैं वो खुद भगवान। So understanding God is a very great science. To understand Shakti Avesh avatar, this is a very great science to understand the different avatars. तो इसलिए ये जो डिफरेंट विभिन्न प्रकार के उनके अवतार हैं, तो विभिन्न प्रकार अवतार के हिसाब से उनका जो गतिविधि है, जो भी कार्यविधि है, वो भी अलग अलग उनके हिसाब से अवतारों के हिसाब से होती है उनकी। And also understanding the different types of moksha, mukti, 5 types of mukti: Panchavidha mukti, Sayujya, Samipya, Shasti, Salokya, Sarupya. There's different types of mukti. It's a great science, and it can only be understood by studying the Shastra. Especially, of course, Srila Prabhupada has made it very easy for us to understand through his books. ऐसे यहाँ पे जो आप देखेंगे जितने भी जो अवतार हैं उनके बारे में अगर हमें समझना है रियली में भी, तो हमारे भगवान प्रभुपाद ने जो किताब है उसके द्वारा हम आसानी से उनके सब अवतारों का या उनके बारे में, भगवान के बारे में जो जिसको समझना बहुत कठिन है, वो आसानी से हम प्रभुपाद की किताबों द्वारा उनको समझा जा सकता है, उनके अवतारों को भी। Hare Krishna. So we can stop there, and if there's any question, we can try to answer a question. We can try. किसी कोई प्रश्न कृपया करके प्रश्न पूछिए। Sadarana Prabhu, you can unmute yourself and ask the question. Hare Krishna. Hare Bol. Just quickly, can you tell what exactly word Pancharatrika means? Is it our Archana process, or what is this word Pancharatrika? Please excuse me, I didn't explain. Pancharatrika
is the process of our type of worship. Our arti, the puja, our kirtan is part of Pancharatrika. The dressing the deities, the functional aspect of bhakti, functional aspect, practical applications, they come under Pancharatrika. And then Bhagavad Vidhi is specifically swadhyay, studying, understanding the different tattvas. There are many tattvas, Shiva tattva, Shakti tattva, Ladini tattva. There's so many tattvas, Jiva tattva, of course, Guru tattva. There are many tattvas for us to understand and get a clear understanding of the whole philosophy. And then we have this Achintya Beda tattva in full, complete. तो यहाँ प्रभु ने पंचरात्रि का क्या उसका मतलब उसके बारे में पूछा प्रश्न, तो उन्होंने बताया कि पंचरात्रि का में जो हम जो अच्छे वगैरह की पूजा करते हैं तो उसमें पूरा आता है, तो संकीर्तन कीर्तन करते हैं वो आता है, इवन जो हम अच्छे वगैरह को उसको उठाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको फिर कैसे नहलाना चाहिए, कैसे उठाना चाहिए, कैसे उनको कपड़े पहनना चाहिए, कैसे उनकी पूजा करना चाहिए, हमें कैसे आचमन करना चाहिए, ये सब जो भी है सब पंचरात्रि का में विधि में आता है। ये सब जितना भी जो हम जो विधि है हमारा अच्छे वगैरह की पूजा करने की। इसके अलावा फिर आता है भागवत विधि। तो भागवत विधि में क्या होता है कि हम पूरा अध्ययन करते हैं, सब जितने भी तत्व हैं, जीव तत्व है, शिव तत्व है और शक्ति तत्व है, ठीक है, गुरु तत्व है, ये सब तत्वों का हम पूरा अध्ययन करते हैं जो, तो ये सब आता है भागवत विधि में आता है वो सब। Okay, Prabhu. Yes, Prabhu. Hare Krishna. That's what I understand. There's more, but this is what I can give. तो प्रभु बोल रहे हैं मैं ये समझा, जितना मेरे को समझा मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा भी हो सकता है कि मेरे को जितना समझ में आया वो मैंने आपको बताया। Any other question? Prashna? Devotees can raise their hands so that or you can put in a chat quickly so that we can communicate to Prabhuji if there is any question from your side. It's a good opportunity to clear your doubts. He's got so much of knowledge. Bhagavad Vidhi, Pancharatrika Vidhi, 2 lines of the railway together. Then the railway goes on. If we don't have enough of one, then there's imbalance. So the greatest problem in our spiritual life is imbalance. We are very imbalanced. Therefore, we have to have equal of both. We have to think, where am I lacking here? Where am I lacking? I have a friend, Mahatma Prabhu. Has anyone heard of Mahatma? Yes, yes. Yeah. I've known him since 1982, and we were together. We're musicians, so we've done a lot of programs, a lot of traveling, and of course, many times we'd be just together doing Ekadashi. We'd stay up all night in Mauritius. I was there with him, and we talk, a lot of talks together. And Mahatma would say that one of the biggest problem we have in our Hare Krishna movement is imbalance. We tend to be imbalanced. We go one way or the other way. And this is a big problem. So becoming balanced means having knowledge of both Pancharatrika and Bhagavad Vidhi and working on both of them together. Offering obeisances, this is Pancharatrika. Any practical application for devotional service comes under Pancharatrika. तो जैसे मैंने जो मतलब अनुभव किया है कि हमारे जो आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा जो खलबली मस्ती है कि जब ये चीज ना दोनों मतलब उनका जो संतुलन वो बिगड़ जाता है। तो संतुलन कब बिगड़ता है और कब हम भक्ति में ऊपर नहीं उठ पाते, उसकी वजह से वो होता है कि जो हमारी जो पंचतात्विका है और भागवत विधि, ये दोनों विधियों का हम संतुलन नहीं कर पाते हैं, इससे पूरा गड़बड़ा जाता है सब मामला। तो ये जब मैं भी महात्मा प्रभु और हम दोनों जब साथ में रहते हैं, क्योंकि हमारा काफी अच्छा एक दूसरे से मित्रता है, तो हम कई बार जो इवन जब एकादशी में जागरण करते हैं तो हम साथ में करते हैं, साथ में उठते हैं, साथ में खाते हैं, तो बहुत टाइम हमारा बहुत सारी चर्चा होती है इसके ऊपर।
तो यही महात्मा प्रभु हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा अभी जो हरे कृष्ण हम आंदोलन में जो समस्या फेस कर रहे हैं, के कारण भक्त लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो उसका ये कि वो संतुलन नहीं कर पाते। पंचरात्रि का विधि और भागवत विधि दोनों का संतुलन जो होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, वो नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण है। तो दोनों पटरी है, जैसे रेल चलती है दोनों पटरियों के ऊपर, तो दोनों पटरियों का होना जरूरी है, तभी रेल अच्छे ढंग से चल सकती है। वैसे हमारी भक्ति रूपी जो रेल है, वो भी जो गाड़ी है, वो तभी अच्छे ढंग से चलेगी जब दोनों में संतुलन होगा, पंचरात्रि के विधि और भगवत विधि। हरे कृष्ण। Wow, well said. Very bold. Haribol. Amazing. How did he do that? Oh, so that's amazing. You could just say he explained the whole thing. Wow. Yes. You got good ears. Hare Krishna. Prabhuji, just want to check one point. In our movement, there are many devotees who come from Sri Parampara, and in Sri Parampara, normally the level of deity worship is much higher standards to what we follow normally in the other places. So there is a slight bit of, you can say, imbalance what I see sometimes, but it's like in some temples it is very strongly imposed and followed, and in some it is like generally followed. So there is a difference. So would that be an aparadh for some devotees, like if they don't follow it? Because deity worship is, it's of course can cause a lot of aparadhas if not followed properly. So how do you see this? Well, when Ramanujacharya, when he visited, of course, Sri Sampradaya is famous for being very, very high standard of puja and hota. And we love it. Well, I mean, it's a fantastic thing to see the hota and to see all the puja done so well. But when Ramanuja visited Jagannath Puri, he saw, well, these people, their standard is so bad. It's not the right. But Jagannath, he likes it like that. That's the way he likes it. So he sent Ramanuja back to Sri Rangam. So in this way, we have to understand that everywhere there's different standard for different reasons. Our standard in the Hare Krishna movement is focused on Sankirtan Yagya. You see, so because of although the puja standards are very good, but the Sankirtan Yagya is the main focus of this the Hare Krishna movement, which involves Pancharatrika and Bhagavad Vidhi simultaneously. So we are focused on that side, and therefore the puja may not be as high as Sri Sampradaya for that reason. That's my understanding. Okay. But would that be like an aparadh? For example, if we don't follow that standard, like deity installation example, we invite the deities to our house. I mean, it's not a full installation like normally in a temple. So how would we see that if some devotee misses the arti, etc. sometimes, or after having the deity, this could create some problem, or is Prabhu, no, we have the Nrsimha Kavacha from Australia. He's been establishing the deity standards for many years to make sure that the pujas are done nicely, and where there are temples and maybe the devotees have left, there's been a problem, or there's less people, he'll reduce the standard, you see, at that temple. He'll say, okay, now to this stand, okay, you can't do 6 offerings a day, you do 4. You do 4, and you keep to 4. So he is there to enforce the deity standard of deity worship. But if an individual is not following that and being somewhat irresponsible, this is an aparadh, definitely. And for their sake, they should be removed and somebody else brought in to keep the standard to the required level for their benefit. Now we know what happened to Jagannath in Rajapur, in the one in Navadvip, Jagannath there. The whole village got wiped out because they reduced the puja so much that
they did one offering a year, one offering a year to that deity. It got so low, and in 1 year they forgot to make the offering to that Jagannath. And the whole village got wiped out with the disease. This is a story told by Jayapataka Maharaj many years ago. So we have to be very careful on that side. So Thank you, Prabhu. any other questions? Yeah, Govinda Prabhu, please go ahead. Yeah, thank you. Hare Krishna, Sakya Prabhu, thank you very much for a wonderful class. I have a query that you, in the initial lecture, we discussed about the Guru being personal as well as philosophical oriented. And then how we have to treat either personal or philosophical. Then we have, I think, it need to be both. So if it is both, is there any proportion for it? 50. The reason I'm asking is, so long the Guru is in the planet, you are so connected personally. Vapu is connected. But once he is not personal in this planet, then it becomes, over a period, it will become Siddhantic. So how do we understand that process of, and especially if he's in the planet, then the other challenges, like you have other gurus also, who is also a persona. There is a persona involved with it. So how do you have to proportionate and do it in a right way, that we see all the tattva as a guru, as a common platform, without offending any other gurus in the movement or across the world. And the Siddhanta will anyway remain a bottom line. But then this persona thing, how should we understand and how should we proportionate and understand? Thank you, Prabhu. Yes, yeah. One thing is sensitivity, being sensitive. Once I was at the temple in London, and a very, very nice devotee from Australia. I really admire him and really respect him so much. But it was just after in 1987, one of our gurus in England, he had left his position, and we were all feeling a little bit sad and sorry for ourselves. And some new gurus were appointed, and this devotee, he said, "Oh, I'm taking initiation from da-da-da-da-da. He is the best." And I said, "Prabhu, how can you say he is the best? Why?" And I said, "You should say he is the best for me. Ding! He is the best for me. Not that he is the best. We got to get away from this mentality. He is the best because I'm the best. This is the ahankar. So because of ahankar, ahankar always messes everything up. So we have to overcome this ahankar situation with knowledge. Knowledge illuminates. Knowledge gives us the balance. It balances everything. So remaining in ignorance is our worst disservice to Sri Guru. A disciple who is very enlightened and balanced and can see things equally, 50-50, nicely. Balance means 50-50, okay? Guru principle, Guru personality, equal. And that way, there's no offense, and then we make progress. So it is up to us to educate ourselves. We have to get educated. We have to find a way, either study yourself. I've had to do a lot of study myself, personally, because I've been very challenged in my spiritual life. In this Guru Tattva, I've had 3 spiritual masters, 3 Diksha Gurus. That means my faith has been very, very heavily challenged because of having 3 Diksha Gurus. It's very hard. So I've had to study a lot of Guru Tattva for my own survival, personally.
but I can share that with others, and it's a good thing. I can't answer it any better than that at this time, Prabhu. Thank you. Thank you, Prabhu. Yes, 50-50 balancing is very good. Thank you. Just trying my best. Govinda Prabhuji, we cannot see you. Where are you? Okay. Rajesh Prabhu, you have a question, I think. Hare Krishna, Prabhu. Dandavat Pranam, Prabhuji. Thank you for the nice lecture, Prabhu. Prabhuji, we have one question. During the class, you said that Lord Rama worshipped even great Mayavadi Lord Shiva. But in the Lord Shiva, we say it's he the greatest Vaishnava, and he told the story of all katha of Lord Krishna and Lord Rama in Bhagavatam as well as in Ramayana to all the world. So how do we take this Lord Shiva as a Mayavadi or Lord Shiva as a great Vaishnava? Oh, Vaishnavanam Yatak Shambhu. Lord Shiva is the greatest Vaishnav. I think when I said the greatest Vaishnav, it may have sounded like the greatest Mayavadi. But Lord Shiva did say to Parvati, Asat Sashtam Makot Girnam, Putam Hari Katamritam. No, he said another one. Mayavadam Asat Shastram, Patshanam Bodham Uchyate, Mayaiva Vihitam Devi, Kalo Brahmana Murtinaha. Murtina, sorry, not Murtina, there's no Visarga. So Murtina, he said that in the Kali Yuga, an expansion of myself will take the form of Shankaracharya. So in one sense, Lord Shiva is a Mayavadi, and on the other side, he is a Vaishnava. So Lord Shiva is so great, he can be both. Shiva Shankar Bhagavan ki. Jai. Hari Bol. Hari Bol. Thank you very much, Prabhu. Thanks a lot. All contradictions are resolved in Lord Shiva. Hari Hari. That is great. Thank you very much for the wonderful class and so many nectars that you shared. Prabhuji, I think it has been nearly 5 years that you came to Shamadesh. If you remember when you came here last, it was on a Rath Yatra day, 29/1/16. That was your last visit here. We had beautiful kirtans, and then it's been a long time. So I think as soon as the COVID settles down, you should please plan a trip. And I don't see Kavita Mati with you today. She's not there. Hare Krishna Mati, Dandot Pranam. Why are you hiding there today? Hare Krishna. Pranam to you. And please give my love to Gopi. I know she must be also feeling so sad, having lost her father-in-law. And very sad, because what's happened is the mother, his wife now, Mrs. Sharma, she's alone, you see, because her daughter's living in Poland, her sons are living in England, and now she's on her own, and and she's elderly. So she's there in Ghaziabad, living there. He passed away in Mathura, thank goodness. He lived in Mathura Mandala, but very, very hard situation. So we're trying to work things out. Right. So has Govind flown to... Yes, he's there now. He's there right now doing the Antyesti today. Okay, fine. Please convey my condolences and also from all of us in Shamadesh. And before we end, can we have 5 minutes of your kirtan again, Prabhuji, as we discussed, ending with kirtan? Clap your hands. Yes. Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Bol. Hare Bol. Hare Krishna. When I Thank come to Shamadesh, we'll Yes. bring the keyboard Hari Hari. for home entertainment. Thank you so much, Prabhuji, and pranams to you and Madhuri again, and lots of love to Gopi. And we like to say Hare Krishna mantra for your good health also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very, very much. Hare Krishna. Nice to be with everyone, even though we are thousands of miles by the process of mystic yoga. We are all together by You mystic are yoga. Birmingham now, or This is Maya Dhanava Shakti. are you in Birmingham now, or where are you right now? Birmingham? Or? Yeah, we're nearby Birmingham. We're just outside the city, about 12, 15 miles north. That cotton something you said. Yeah,
Sutton Coalfield. It's a kind of I don't know how to describe it. It's an area of by the country. We're in the countryside. Great. Thank you again. Vanchakalpatarubhasya kripa सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंतकोटि Oh, वैष्णव the devotees in Kamadesh. Haribo. हरि बोल हरि बोल हरि बोल Take care. And don't catch COVID. Don't catch COVID.